So hello everyone. At this class I am going to discuss about complex plane or Argand plane, which is a part of a complex number. Alright, this is important part of a complex number. कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन क्या है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा. ठीक है. सपोज x dash ox and y dash be two mutually perpendicular lines. X dash ox and y dash be two mutually perpendicular lines. All right, where the horizontal line is called x-axis. We all know about the xy plane. Yes or no? Where the horizontal line is called x-axis, whereas the vertical line is called y-axis. Alright? So this is a Cartesian plane or you can say xy plane. लेकिन हम लोगों को डिस्कस करना है कि about complex plane or Argand plane. Alright? Say, since we know the standard form of a complex number is x plus iy, so let x plus iy be a complex number. Let x plus iy be a complex number. This complex number can be represented by a point, say p of x comma y. This complex number x plus iy can be represented by a point, say x comma y, in the xy plane. This is xy plane or you can say Cartesian plane. Yes. So the complex number x plus iy can be represented as a point p of x comma y in the xy plane. This xy plane is called a complex plane or a Argand plane. Okay. When a complex number, we know the definition of complex number is any number of the form x plus iy is called a complex number. ठीक है. अगर कोई complex number को एक पॉइंट में p of x, y पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो प्लेन को xy प्लेन को ही कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन बोला जाता है. ठीक है. If the complex number x plus iy can be represented by a point p of x comma y in the xy plane, then the xy plane is called a complex or an Argand plane. Alright, where x-axis is called the real axis. X-axis is called the real axis, whereas y-axis is called the imaginary axis. Y-axis is called the imaginary axis. ठीक है. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब एक पॉइंट में रिप्रेजेंट किया जाता है उसका x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है रियल एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन, तो इसमें जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलते हैं इन केस ऑफ xy प्लेन. In case of complex plane, this horizontal line is nothing but real axis, whereas the vertical line we used to say as y-axis in case of xy plane, but in case of complex plane you have to say that this is an imaginary axis. Imaginary axis क्यों? Because I के साथ जो वेरिएबल होता है मीन्स y का जो टर्म होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है. yes, it is the combination of real and imaginary part only. Real complex number means, okay, so x-axis is called a real axis, whereas a y-axis is called an imaginary axis. ठीक है. There is one important point which you have to remember. Every points on x-axis are real number. Listen carefully. Every points on x-axis are called real numbers, whereas if every points on y-axis are called imaginary numbers. Since x-axis is called real axis, so that is why every point on x-axis is called real number, and whereas every point on y-axis is called imaginary numbers. Alright, so अभी देखो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. से -2 + 3i, वन कॉम्प्लेक्स नंबर आई हैव रिटन. तो इसको कार्टेशियन प्लेन में मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, अभी तो मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन वर्ड यूज करना चाहिए, राइट. तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे डालना है?
सो -2 + 3i को पहले ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करना है ना, मीन्स x, y कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है. सो -2 + 3i कैन बी रिटन एज -2, 3. यस. सो -2, 3 लाइज इन विच एक्सिस? x नेगेटिव y पॉजिटिव लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी नॉट एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे होगा सपोज -2, 3. से 4, -5. 4, -5 मीन्स सॉरी 4, -5 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. सो 4, -5. सो लाइक दिस ओनली वी कैन आइडेंटिफाई कौन सा पॉइंट, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है. ऑलराइट. सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा पॉइंट में रिप्रेजेंट करके हम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो वो कार्टेशियन प्लेन हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यू कैन से an Argand plane, okay, where the x-axis is called real axis, whereas the y-axis is called the imaginary axis. Every points on x-axis are real number, whereas every points on y-axis are called imaginary numbers. Okay, so this is all about complex or Argand plane. Okay, so अगर complex और Argand plane clear हुआ तो इसके बाद जो important point आएगा, जो important topic आएगा वो है polar form of a complex number. Okay, so polar form जानने के लिए ये complex plane पहले जानना बहुत जरूरी है. So next the important topic of a complex number is, subtopic of complex number is polar form. Polar form of a complex number. Polar form of a complex number. इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है. जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे कि एक लीनियर इक्वेशन दैट इज ax + by + c = 0 को कैसे हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर कैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और हाउ कैन वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म. So here also one complex number will be given like z = x + iy, and that complex number you have to reduce in polar form. वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, that one I'm going to discuss now. Alright. So let us take one complex plane. Now don't say it is a Cartesian or XY plane, क्योंकि अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ. तो ये जो प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ that is called एक that is complex plane only. Alright, so x dash ox, y o y dash be the two mutually perpendicular lines. Alright, let there is a point P whose coordinates say r, theta I have taken. I will explain why I have taken r and theta. Let there is a point P and the distance from O to P is r. The distance from O to P say r. Okay, सो ये एक छोटा सा डायग्राम है. तो अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो लेट अस कंसीडर z is equal to x plus iy. Let us consider a complex number z equal to x plus iy. Let us consider a complex number z equal to x plus iy represented by the point p of x, y. Generally कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक पॉइंट के हिसाब से. यस और नो? ओके, लेकिन यहाँ पे मैं जो कोऑर्डिनेट लिया r, थीटा, और यहाँ पे मैं लिया x, y. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ फर्स्ट डिफरेंस. ओके, यहाँ पे x, y लिया और यहाँ पे r, थीटा लिया. r, थीटा के बारे में मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले ये स्टेटमेंट ठीक से सुन लो और एक बार. लेट अस कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to x plus iy be represented by a point p of x, y in the complex plane or in the Argand plane. मतलब ये पॉइंट ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में है. ठीक है, देन लेट अस कंसीडर एंगल XOP. से एंगल XOP is equal to theta. Angle XOP is equal to theta, and the length of OP is equal to r, which is always greater than 0. We all know that modulus cannot be negative or distance cannot be negative. तो ये है OP का डिस्टेंस. OP का डिस्टेंस डायग्राम में है, which is equal to say r, which is always greater than
0. All right. Then let us consider P of r comma theta be the polar coordinates. Be the polar coordinates. R comma theta be the polar coordinates. Okay. तो यहाँ पे जो P of r comma theta में डायग्राम में लिया था वो कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, वो पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, P of r comma theta be a polar coordinate. Polar coordinate क्यों? Because we are trying to convert or express a complex number in polar form. तो पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा याद रखना ये जो पॉइंट P of x को x, y है, ये x, y को r, थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा. ओके, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में किए थे ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, इसको जब नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस किया था तब क्या किया था हम लोग, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के साथ कंपेयर किया था, है ना. ये sin अल्फा cos अल्फा कहां से आ गया, वो डिराइवेशंस भी एक्सप्लेन किया नॉर्मल फॉर्म का. यस और नो. सो हियर आल्सो सेम, whenever you are asked to convert any complex number into polar form, always you have to consider the coordinate as P of r comma theta, because r और थीटा का जरूरत है पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर फॉर्म में. ठीक है, अभी तक मैं वो पोलर फॉर्म का इक्वेशन नहीं लिखा, लेकिन उसमें जरूरत पड़ता है, इसीलिए r comma theta लेना पड़ता है हमेशा. ठीक है. So let us consider P of r comma theta be a polar coordinates. All right. Then from the triangle, let us draw a perpendicular, say M on OX. PM on OX. Let us draw a perpendicular PM on OX. Then from the triangle POM, comma, we can write cos theta is equal to, listen, cos theta is equal to what? Base by hypotenuse, right? So base is what? Along x-axis. So let us consider this one as x, small letter x, and this one is say small letter y. और OP का लेंथ तो पता ही है, that is r. Okay, so since cos theta is equal to base by hypotenuse, that means base is here x, hypotenuse is here r. So cos theta is equal to x by r, which implies x is equal to r cos theta. Similarly, sin theta is equal to perpendicular by base. Perpendicular means PM by OM. PM means y. So y by r. So which implies y is equal to r sin theta. तो चलो x equal to r cos theta निकल गया, y is equal to r sin theta. Now we have to substitute these two values. x और y का वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे. सो देयरफॉर दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन 1 implies z is equal to r cos theta plus I into r sin theta, which is called the polar form or trigonometric form or modulus amplitude form of a complex number. Okay, so this z equal to r cos theta plus I r sin theta is called polar form. बहुत सारा नाम है, polar form और trigonometric form और modulus amplitude form. सब नाम जानना जरूरी है. क्वेश्चन पेपर में अगर पोलर फॉर्म के जगह में अगर पूछ लेगा कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा. सो यू शुड नो ऑल द नेम. ओके, पोलर फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म और यू कैन से मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑलराइट, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या नया टर्म मिला, आर एंड थीटा. ऑफ कोर्स कॉस एंड साइन के बारे में सबको पता है, दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है ना. सो अपार्ट फ्रॉम कॉस एंड साइन द न्यू टू टर्म्स आर देयर, दैट इज आर एंड थीटा. वही आर और थीटा को ही पोलर कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है. सो विदाउट नोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट वी कैनॉट एक्सप्रेस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म. एंड टू एक्सप्रेस or to reduce any complex number into polar form, you must take the coordinate as r comma theta, because look at the equation.
Here r and theta are the new terms, whereas cos and sin we all know these are trigonometric ratios, right? और I के बारे में तो सबको पता है कि ये imaginary term है, z equal to x plus iy, right? So this is the derivation. Derivation का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या है एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसका नाम क्या क्या हो सकता है? पोलर फॉर्म भी बोला जा सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोला जा सकता है, और यू कैन से मॉडुलस एम्पलीट्यूड. बट व्हाई वी हैव टू व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड मॉडुलस एम्पलीट्यूड? लुक, लिसन, व्हाट इज दिस r? r means modulus of ap, that is op, that is the distance from o to p. So r is called the modulus. Okay, r is called the modulus. We can determine the value of r by using the distance formula, that is the distance between o and p. ठीक है, OP के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा r का वैल्यू. जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी सिर्फ याद रखना है किसको क्या बोला जाता है. The third term, I am using modulus amplitude form, but what is modulus here? R is called the modulus, whereas theta is called the amplitude of the complex number. Alright? R is called the modulus. R is called the modulus, which is always greater than 0, where theta is called the amplitude. Theta is amplitude, or you can say argument also. Theta is called the amplitude or argument also. और थीटा का वैल्यू ये रेंज के अंदर होना चाहिए, -π, लेस देन थीटा, लेस देन और इक्वल टू पाई. दिस इज द रेंज ऑफ थीटा. जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब थीटा का वैल्यू देखने से पता चलेगा. थीटा का वैल्यू, थीटा का जो रेंज है, एंगल का जो रेंज है, वो -180 से लेकर 180, मीन्स एक्सक्लूडिंग -180 बट इंक्लूडिंग 180. ठीक है, -180 स्ट्रिक्टली लेस देन आई हैव गिवन ना. सो स्ट्रिक्टली लेस देन मीन्स एक्सक्लूडिंग दैट वैल्यू, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग -180 डिग्री बट इंक्लूडिंग 180 डिग्री. ओके, सो अभी समझ में आया. तो फिर मॉडुलस और एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या है? मॉडुलस मीन्स r इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, whereas theta is called the amplitude or argument, where the range of theta is -π, less than theta, less than or is equal to 180. Okay, so this is all about the derivation of polar form. अभी क्वेश्चन है कि ये पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कुछ तो स्टेप्स होगा. हम लोग तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म में नहीं बैठा सकते हैं विदाउट नोइंग द वैल्यूज ऑफ r and theta. How can we convert any complex number into polar form? There are some working rules. There are some working rules to convert or to reduce any complex number into polar form. मतलब r और थीटा का वैल्यू अगर नहीं पता होगा तो then how can we express or how can we reduce any complex number into polar form? So वही r और थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? Now I am going to give the working rules. Okay, so working rules for converting z equal to x plus iy into polar form. Now I am going to discuss about the working rules for converting z equal to x plus iy into polar form. तो एक हमेशा याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए r और थीटा का वैल्यू जानना जरूरी है. बस इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा देन यू कैन इजीली कन्वर्ट और यू कैन इजीली रिड्यूस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म. ओके, सो लेट द फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म इज लेट अस कंपेयर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ r cos theta plus I into r sin theta, because this is the standard polar form of a complex number. So always you have to compare the given complex number with r cos theta plus I into r sin theta. So after comparing, then you equate the real and imaginary part. So r cos theta is equal to x, say this is equation number 1, whereas r sin theta is equal to y, say this is equation number 2. This is the second step. After comparing the given complex number with r cos theta plus I into r sin theta,
The next step, you have to equate the real and imaginary part. So like this you have to equate. This is second step. Now the third step is squaring and adding equation 1 and 2. 1 और 2 को अब square करके add करना है. Why? Now I am going to find out the values of r and theta. That is why square and add equation 1 and 2. So r square cos square theta plus r square sin square theta, which is equal to x square plus y square. Yes. So which implies r square. If I take r square common, it will be cos square theta plus sin square theta, which is 1 only. So r square is equal to, we can write x square plus y square, or r is equal to under root x square plus y square, which is always greater than 0. This is the third step. This is the third step. मतलब थर्ड स्टेप में ही हम लोगों को r का वैल्यू मिल जाएगा, और जो r का वैल्यू होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज लुक एट द एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो रूट ओवर के अंदर जो टर्म है दैट मस्ट बी मोर देन 0 ना. अगर लेस देन 0 होगा तो वो तो इमेजिनरी टर्म हो जाएगा. एंड मोर ओवर दिस r इज कॉल्ड व्हाट? एज पर दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन r इज कॉल्ड व्हाट? r इज नथिंग बट द लेंथ, the distance from the point O to P. यही तो था. तो distance we all know that it is cannot be negative. It's neither negative or not imaginary. ठीक है ना. तो distance imaginary भी नहीं होगा, negative भी नहीं होगा, तो हमेशा positive होना चाहिए. So इसीलिए जो value मिलेगा r का, that must be greater than 0 always. Okay. So by using the third step, up to third step, we can find out the value of r. Now you have to find theta also. Okay. So to find out the values of theta, we have to follow 4 cases. There are 4 cases to find out the value of theta. Case number 1. If the given complex number lies in the first quadrant, then theta is equal to alpha. Theta is equal to alpha means theta is unknown. We have to determine theta, whereas alpha is the known angle जो क्वेश्चन में दिया रहेगा. Okay, alpha is the known angle and theta is unknown angle, right? So when z lies in the first quadrant, now the question is, how can we say that the complex number lies in the first quadrant or second or third? Just now I have explained about that complex or Cartesian plane, इसीलिए explain किया था पहले. So अगर z equal to मैं लिखूंगा कि 3 प्लस आई, तो 3 प्लस आई कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है. सो 3,1 है ना, 3,1, तो 3,1 बोथ पॉजिटिव मींस इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज. सो लाइक दिस ओनली यू कैन आइडेंटिफाई दैट whether the given complex number lies in the first or second or third or fourth quadrant. If it is in the first quadrant, then theta equal to alpha, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं. When z lies in the second quadrant, then theta is equal to pi minus alpha, 180 degree minus alpha. Alpha is known angle, theta is unknown. Now if z lies in the third quadrant, then theta is equal to alpha minus 180. Theta is equal to alpha minus 180. And the last case is when z lies in the fourth quadrant, then theta is equal to minus alpha. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. सो थीटा इक्वल टू अल्फा कब होगा? व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा कब होगा? व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर्गंड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन यू कैन आइडेंटिफाई. Okay, if the complex number lies in the second quadrant, then this is the condition, theta is equal to 180 minus alpha. And when the complex number lies in the third quadrant, theta is equal to alpha minus 180. Okay, so these are the 4 cases to find out the value of theta. Whereas up to third step, we can find out the value of r. And if you know the values of r and theta, it is more than enough to express any complex number into polar form. Alright, so this is all about the polar form of a complex number, and the previous one I have explained about complex plane or Argand plane. Now I am going to discuss a few examples how to convert any complex number into polar form. Alright, so let us discuss few questions related to that polar form. So I have given 2 questions. The first one is,
√3 plus I. This is one complex number. क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा एंड यू हैव टू एक्सप्रेस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. एंड समटाइम्स we used to say that cis theta also. Cis theta means C for cos, I for imaginary and S for sin theta. मतलब अल्टीमेटली बात वही होगा. ठीक है, cis theta में भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है. तो चलो ये cis theta के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा. लेट मी डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. z इक्वल टू √3 प्लस आई. जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उसको z बोल के रिप्रेजेंट कर लिया. What is the first step? Compare this complex number with r cos theta plus I into r sin theta. So look at here. If I compare this complex number with r cos theta plus I into r sin theta, clearly we can say that r cos theta is equal to √3, whereas r sin theta is equal to 1, because here the coefficient of I is 1 only. All right. So this is say equation number 1 and this one is say equation number 2. Now what you have to do? r cos theta is equal to √3 and r sin theta is equal to 1. अभी क्या करना पड़ेगा? Squaring and adding. 1 square plus 2 square. Squaring and adding. So r square is equal to √3 whole square, that is 3, plus 1 square, that is 1. So which implies r is equal to 3 plus 1, that is 4. √4 means don't write plus minus 2. Use the proper sign, because we all know that r means modulus and modulus cannot be negative, which is always greater than 0. So this is the value of r. तो चलो पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म का जरूरत था, that is r and theta, we know now the value of r. Now what you have to do, you have to find out the value of theta. Listen now, to find out the value of theta, substitute the value of r in the first equation as well as in the second equation. So equation 1 implies, if I substitute the value of r here, so then cos theta is equal to, can be written as √3 by 2. Similarly, if I substitute the value of r in the second equation, then it can be written as sin theta is equal to 1 by 2. Alright. Now the question is, in order to find the value of theta, I have given 4 cases, right? तो इसमें से कौन सा केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? लुक एट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. √3 plus I, x coordinate is √3, y coordinate is 1. So means both are positive, right? So both positive lies in which quadrant? Both positive lies in the first quadrant. And in first quadrant, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज द नोन एंगल. सो यहाँ पे अभी कैसे पुट करना पड़ेगा? एंड वन मोर थिंग, ये जो अल्फा होगा, दिस मस्ट बी 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाई 2. दैट मीन्स दिस मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2. अल्फा का जो वैल्यू होगा, ऑफ कोर्स इट इज ए नोन एंगल, राइट? लेकिन नोन एंगल होने से रेंज क्या होगा? 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए अल्फा का वैल्यू. ऑलराइट. सो नाउ लुक एट हियर, cos theta is equal to √3 by 2. Therefore cos theta is equal to, this √3 by 2 can be replaced by cos 30 degree, that is pi by 6. Yes, therefore theta is equal to pi by 6 only. In this case also same only. यहाँ पे theta का वैल्यू जो होगा, in case of the second equation also it must be same. So sin 30 degree is half. Theta is equal to pi by 6. Since the given complex number lies in the first quadrant, so theta is equal to alpha. Alpha is what? Which is a known angle, and this is the range of alpha. Alpha must be lies between 0 and 90. And look at the angle 30 degree. 30 degree is always lies between 0 and 90. हमेशा 0 और 90 के अंदर ही होना चाहिए अल्फा का वैल्यू. ठीक है. Now we know the value of theta. Even we know the value of r also. Now we can easily convert the complex number into polar form. So therefore the required polar form is z is equal to, substitute the value of r, 2 cos pi by 6 plus I into 2 sin pi by 6. Or else if you want to take 2 common, you can take 2 common also in the next step. ठीक है. So 2 common लेने से ले भी सकते हैं हम लोग. So this is the required polar form
of the given complex number. All right, this is important question. These are ठीक है, polar form बहुत important. So this is the first question. Let me discuss the second question now. Second question में थोड़ा सा चेंज करके दिया, थोड़ा सा अलग तरीके का दिया, देखने से ही पता चलेगा क्या है. सेकेंड क्वेश्चन में मैं सिर्फ दिया √-3. एक्सप्रेस दिस नंबर, एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म. सो -3 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? -3 वी ऑल नो इट इज ए रियल नंबर, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में है यही, रिड्यूस और रिप्रेजेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म. तो अगर सिर्फ -3 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्रेस और यू हैव टू राइट द standard complex number. Okay, so -3 can be written as -3 plus I into 0 also. Okay, since -3 is a real number we all know, but in order to express any complex number into polar form you have to write the first standard form of the complex number. So -3 can be written as -3 plus I into 0. Okay, now compare this complex number with r cos theta plus I into r sin theta. So what will be the value of r cos theta? R cos theta is equal to -3. This is the equation number 1. Whereas r sin theta is equal to 0. This is the equation number 2. Alright. Now squaring and adding. Squaring and adding. 1 square plus 2 square, which implies r square is equal to -3 whole square, that is 3 only, and 0 square is 0 only. So -3 whole square. So r is equal to 3, which is always greater than 0. Yes, we know the value of r. Now what you have to do? You have to substitute the value of r in the first and the second equation to find out or to determine the value of theta. R का value equation 1 and 2 में डालना है. So therefore cos theta is equal to, what will be the value of cos theta if I substitute the value of r here? -3/3, that is -1. Similarly, if I substitute the value of r in the second equation, then what will be the value of sin theta? Sin theta is equal to 0. Alright. So cos theta is equal to -1 and sin theta is equal to 0 mila. Right. Now how to determine the value of theta? Look at the given complex number. The given complex number lies in the which quadrant? -3. -3 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? -3 plus I into 0. That means -3, 0 है. ये जो पॉइंट है XY प्लेन में जो डालना है वो -3, 0. ऑलराइट. सो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज 0. दैट मींस इट लाइज इन which quadrant basically? x coordinate negative, y coordinate 0. 0 is a neutral value, so that means we can say that it is in the second quadrant only. Okay, it is in the second quadrant only. Y coordinate is 0 and we all know that 0 is a neutral value. But since x coordinate is negative and y coordinate is 0, always you have to consider that the point lies in the second quadrant. And if the point lies in the second quadrant, then what's the value of theta? Theta is equal to pi minus alpha, where alpha, the range of alpha is 0 less than alpha less than pi by 2. The value of alpha must be lies between 0 and 90. सब हर टाइम में, ठीक है. So cos theta is equal to -1. Therefore cos theta is equal to -1 को कैसे रिप्लेस किया जाएगा? No need to write then cos theta. So theta is equal to, because theta should be common for both the equation ना, तो एक साथ ही निकालने से बेहतर है. So theta equal to, the formula is pi minus alpha. अभी alpha का वैल्यू क्या होना चाहिए? Look at here, sin theta is equal to 0. We know sin 0 degree is 0. Alright, sin 0 degree is equal to 0. And cos theta is equal to -1. Cos theta is equal to -1. तो cos theta equal to -1 means theta का वैल्यू तो फिर क्या होना चाहिए? थीटा का वैल्यू, cos theta is equal to -1, then what will be the value of theta? थीटा 180 हो सकता है. यहाँ पे तो cos theta -1 है, लेकिन sin theta 0 है. So sin, we know sin 0, 0. We know sin 180 is also 0. Yes, we know sin 0 degree is 0. Even sin 180 is also 0. But since here theta is, means in case of cos theta here -1 is there. So that means we have to consider the value of theta as pi only, because
थीटा का वैल्यू अगर पाई लूंगा तो ही जाके ये दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। थीटा का वैल्यू अगर मैं जीरो लूंगा तो ऑफकोर्स साइन जीरो इज जीरो, बट थीटा का वैल्यू अगर मैं सॉरी नॉट थीटा, अल्फा का वैल्यू अगर मैं जीरो ले लूंगा तो फिर सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, not the first one, because we know that cos 0 degree is 1 not minus 1. So you have to choose the common angle which is common to both first and second equation. You have to choose the angle which is common to both first and second equation, मतलब दोनों equation को satisfy करना चाहिए. So the angle which is common to both the equation 1 and 2 is 180 degree, because the value of sin 180 degree is 0 as well as the value of cos 180 degree is minus 1. So that is why the value of alpha will be the value of theta will be pi. Okay, the value of theta is pi here. So now we know the value of theta, we know the value of r also, therefore the required complex number is z is equal to r cos theta, that is 3 into cos pi plus I into 3 into sin pi. Now if you want to verify whether your answer is correct or not, you can verify it also. The value of cos 180 degree we all know minus 1, so minus 1 into 3 is minus 3. The value of sin 180 degree is 0, so 0 into this one is everything will be 0. ये term 0 हो जाएगा, so ये term में minus 3 रहेगा, so minus 3 plus 0 is minus 3. So question में भी दिया गया है minus 3. So ultimately अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो you will get the given complex number only. All right, so this is all about the second question. So अगर ऐसा नॉर्मली सिर्फ इमेजिनरी टर्म या फिर ओनली रियल टर्म दिया रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म. सपोज यहाँ पे ट्वाइस आई दिया गया है, पूछा गया है कि रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल टर्म भी हो सकता है, राइट? रियल टर्म भी होना चाहिए, तो रियल टर्म इसका मतलब जीरो है. लाइक दिस यू हैव टू एक्सप्रेस 0 plus 2i or I into 2. All right, so this type of questions are there, you have to practice more. So this is all about the polar form of a complex number. In the next class I am going to discuss about the cube root of unity. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर यूज होता है. ऑलराइट, थैंक यू फॉर